Hello everyone, a very good afternoon and welcome back to my YouTube channel, the Powerhouse Ideas. I have been able to not make videos from a very long time because I have been running very busy. But I have been getting a lot of queries from many people who are having a small capital and think that they won't be able to generate any money from the market. Due to this fact, all those retailers who have small capital tend to move towards FNO, and that small capital is also washed away because they have not polished themselves on the movements which happen on the chart, and they don't understand the logic of trading with the trend, how to manage their risk, and still they jump into FNO just because of one simple thing: they want to earn quick money. So I decided during the start of this month to open a new account in my name wherein I'll be putting a small amount by which I'll be trading separately in addition to my regular account, and show you guys and how money can be made with a small capital as well. So this video is very important for you if you are struggling to make money in cash market, not the FNO market, not the commodities, only in cash market with swing trading, no intradays, and you are not able to generate money. So if you want to listen to the fact that how I made a good percentage, when I say good, I mean more than 3% or more than 3.5% in a month, you can easily generate, or 2% is very much achievable in a month, provided you follow what all things I tell you in this video. So I made a new account wherein I put some money into that account. I'll show you the entire details. You can see on the screen, this is my balance account which I have downloaded from Grow Demat account. You can see the period which I have selected is March till 1st of May, that is today on which we are recording the video. The first entry you can see over here was of 50,000. My balance was also 50,000. So this was the first entry which I made. Before that there was no entry. Then I took away 1000 just to check that whether there should not be any glitch in withdrawing the money. I cannot put a lot of money and then get a fix of not able to withdraw it. So I just checked it that whether I am able to withdraw it or not. Then I added 1 lakh, then I added 41,000. So this in totality comes out to be 1,90,000. I added 1,90,000 in the first 6 days. Then I added, I'll show you, I added 10,000 rupees more. So 190 plus 10,000, it comes to 2 lakh rupees. So I was trading with this capital from 5th of April, not for the entire day, also for 25 days and minus the trading holidays, that is Saturday, Sunday. I just had 20 days. And in 20 days, I am able to make 3.4%. But how is that possible in cash market? How can we make every trade go into profit? I only hit one stop loss in this entire period, and the, you can say, entries which I'm currently holding also, almost every entry is in green, that is profit. But how I did it, how I managed my risk, I'll show you everything. I'll show you the entries also with all facts disclosed, nothing hidden. I'll show you everything, how I took it, why I took an entry, how I managed the risk. And the most important part in all these entries was I did not risk more than 500 rupees. By risking a same amount in every trade, I had a comfort by seeing the Demat account only, not going to any chart. By seeing the profit and loss figure only, I could have managed to see that what all trades are near my target, because the minimum risk to reward which I played was 1:2, and what all trades are near to my stop losses, because if I see any amount near to 400 rupees, 350 rupees, that means that the trade might hit a stop loss, because in every case I have kept one same amount as stop loss, that is 500 rupees. So this is how you can also manage your Demat account, by keeping every trade with the same stop loss. How much better you find a trade, how much bad you find a trade, if that trade fits into your setup, you should only risk one single amount every time if you have to be profitable. This is part of my strategy which I follow. If I'm risking 2000 rupees every time, I'll risk 2000 only every time.
every time. If I'll find a very good trade, then also I won't be putting in much money. I won't be doubling my stop loss. I won't do that, because that's part of risk management. I am earning good money, and one such trade which I found is having a probability of giving me a good money. I put a bigger amount into it, and what if that trades goes against me? अगर वही ट्रेड जिसमें मैंने पैसा ज़्यादा डाल दिया वो मेरे अगेंस्ट चलेगी, तब क्या होगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर एक ट्रेड के अंदर एक सिंपल अमाउंट, एक सेम अमाउंट हमेशा रिस्क करें. तो ये मैंने उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल कम है उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको सुननी चाहिए लास्ट तक. अब चलते हैं कि मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स ली. आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये जो एम कॉलम है, यहाँ पे एम कॉलम बहुत क्लियरली बताता है रियलाइज्ड पीएनएल. सबसे पहले आपको इसका पीरियड दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ भी क्लैरिटी जो है वो मिसिंग ना रहे. You can see over here with the capital of 2 lakhs, I have earned a return of 6026. That is roughly 3.5%. I'll show you every trade, how I did it, or not every trade. I'll show you few trades to make you understand that how I trade and how I have been able to close out of 10 trades, 9 trades in profit. Though some of the trades were with very small stop loss, you should not be disheartened. Some of the trades were with very small targets, you can say profits, but you should not be disheartened by seeing that these are very small targets. You will be getting some good trades in between, and that will be able to sail you through. वो आपको आराम से profit में लाके खड़ा कर देंगे. So you can see out of 10 trades, only one went into a stop loss, and rest all I managed to close in profit. Now let us analyze 2 or 3 trades, and I know you will be interested in seeing that how I made 2200 rupees and how even after applying 71,000 rupees in one trade, I was able to risk only 500 rupees. So these kind of good trades in between can make you earn good money. It's not about every trade you will be able to earn good money. 1, 2, 3, only 4, 5 trades in a month is able to generate a sufficient money for you. Don't overpopulate your demat account by holding 30, 40, 50 entries. At this point of time also, you can see I just hold 14 entries. Only 14 entries, and that also there are net into profit. Only 3 are running into losses right now, and you can see none of them is more than 300. Means the stop loss of 500 rupees is quite far, and this is only 5 rupees in loss, 135 rupees in loss, 215 rupees in loss. So you can also replicate that. आप भी सेम इस तरह कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं ट्रेड्स की. मैंने कैसे ट्रेड ली, मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या था, मेरी आइडियोलॉजी क्या थी, साइकोलॉजी क्या थी उस समय लेने के लिए मैं आपको समझाऊंगा वो. सबसे पहले हम चलते हैं एस्ट्रल के ऊपर. एस्ट्रल का ही चार्ट खुला हुआ. मैंने इस स्टॉक में एग्जैक्टली बॉटम पे एंट्री ली, एंड विद द वेरी नेक्स्ट डे यू कैन सी अ बिग ग्रीन कैंडल. दिस वाज द लास्ट डे. आई अपडेटेड दिस इन द टेलीग्राम चैनल आल्सो. इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम चैनल, you should be there, because every analysis I share, the link you will find in the description. So what I saw in this chart which made me entry exactly at the bottom. Bottom मैंने कैसे पकड़ा? लोग कहते हैं bottom नहीं पकड़ सकते हो. आप पकड़ सकते हो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो. I don't talk about investment much up, because investment मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है. I'm able to generate a good percentage. This is a small account wherein I will able to generate a 3.4%. Similar trades मैंने अपने बड़े अकाउंट में भी ली थी जो मेरा रेगुलर अकाउंट है. Just because of personal reasons, it's personal finance and I don't disclose it. मेरा यहाँ पे फ्लेक्स करने का मतलब नहीं है. I don't want to prove anything to anyone. I just want to tell you that you can also do it, and I found this way the best way. So मैं बड़ा अकाउंट कभी डिस्प्ले नहीं करता हूँ. मैंने पब्लिकली कभी डिस्क्लोज नहीं किए मेरी होल्डिंग्स एंड ऑल, बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल. मेरा पैसा है, मुझे खुद को ग्रो करना है. मुझे कोई पेड मेंबरशिप नहीं बेचनी है जिसके लिए मैं आपको एक लालच दिखाऊं. तो बात करते हैं इस ट्रेड को मैंने क्यों ली और कैसे ये ट्रेड सही गई. मुझे दिखा यहाँ पर कि इस स्टॉक जो है लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन कुछ स्टॉक में ऐसा हुआ जिसमें मुझे ये मेरे रडार में आ गया. रडार में आने के बाद मैंने देखा कि स्टॉक ने यहाँ पर कुछ एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न काइंड ऑफ बनाया, या आप कह सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ बनाता हुआ मैं दिखा. उसके बाद स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का विद अच्छी वॉल्यूम. सो दिस वाज अ गुड थिंग, बट आई डिड नॉट टुक एन एंट्री ओवर हियर. आई वाज वाचिंग दिस. व्हाई आई डिडंट टुक एन एंट्री? बिकॉज द स्टॉप लॉस वाज वेरी बिग. अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के नीचे रखता हूँ, जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था, मैं इसके नीचे रखता हूँ. तो दिस वॉज अ बिग स्टॉप लॉस. और अगर मुझे 500 रुपये का रिस्क लेना था, 500 रुपीज पर ट्रेड, देन मेरा पोजीशन साइज बहुत छोटा होता. देन आई वेटेड. हाउ मेनी डेज आई वेटेड? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th trading day I took an entry. So what gets important over here is also patience. आपको ट्रेड के अकर होने का वेट करना है. You need to the chart give you signals that yes, this is the right entry time. So what I saw was there was a breakout, then the stock moved up, then it corrected. While it was correcting, the candle size was getting smaller, right? The volume was also not that much. The volume which came at the time of breakout was totally reduced at the time of fall. So one thing I had it in my mind very clear that this can be a profit booking. Then one day I saw a doji candle. The candle size was getting smaller. You can see when the stock was rising up, the candle size also started getting smaller over here. Then we got two dojis. Then stock candle size increased into red, and then it again got smaller, and then we had two dojis. Similar pattern we had over here. Similar pattern we had over here. I call this pattern as a depletion of selling pressure. We already knew कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है स्टॉक के अंदर, एक प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग में सेलिंग है उसका डिप्लीशन मींस खत्म हो गया सेलिंग प्रेशर. ये ऐसा मुझे दिखा. प्राइस ने एक डोजी बनाई. नेक्स्ट डे व्हेन आई टुक एन एंट्री इट वाज अगेन फॉर्मिंग अ डोजी. Now what stop loss I kept? I kept a stop loss immediately below this doji just because I knew कि अगर इस स्टॉक को ये हायर लो बनाना है तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ थी, प्रॉफिट बुकिंग थी विदाउट वॉल्यूम, कैंडल साइज छोटा हो रहा था, एक इनडिसीजन कैंडल बना था. तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली एंड मेरा स्टॉप लॉस कितना था? मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ 10 रुपये. मैंने 50 स्टॉक इसमें एंटर किए थे. 50 into 10, even after adding 71k into this trade, I managed to keep a stop loss of only 500 rupees. अगर यही एंट्री मैंने यहाँ पे ली होती तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस कितना निकल के आता है. यहाँ पे वहां पे मैंने 50 ट्रेड ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल गया था 100 रुपए. यहाँ पे मैं सिर्फ 5 स्टॉक्स ले सकता, यहाँ पे मैंने इस जगह पर मैंने 50 स्टॉक्स लिए. सो दिस इज हाउ आप पोजीशन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं. मैंने भी यहाँ पे पोजीशन साइज को कंट्रोल किया जस्ट बिकॉज मैंने एक ऐसी जगह पर एंट्री ली जहां पर मेरा रिस्क बहुत कम था. इस वजह से मैं बड़ा कैपिटल इसमें लगा सका. द वेरी नेक्स्ट डे द स्टॉक ओपनड गैप अप एंड इट स्ट्रेट अवे मूव्ड अप. द पॉइंट इज, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको यहाँ पे क्यों निकल गया, मैंने वेट क्यों नहीं किया. अगर मैंने वेट किया होता तो मैंने 1000 रुपये और बनाया होता. Just in one day, I would have earned more than 4% rupees. And एकदम से बॉटम पकड़ने के बाद मैंने वेट क्यों नहीं किया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ. जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो इस जगह पर जब स्टॉक था तो यहाँ पे आर्ली कैंडल्स आई वाज सीइंग. आर्ली कैंडल्स में मुझे कुछ इनडिसीजन देखने को मिल रहा था एंड नीचे वॉल्यूम भी कोई खास नहीं आ रही थी डेली कैंडल के ऊपर. सो आई थॉट कि मुझे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए एंड आई एग्जिटेड. And I also informed in the Telegram channel that I have exited this trade. I may be completely wrong, but मैंने अपना प्रॉफिट बुक करना सही समझा. उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, but I was not feeling any regrets because मार्केट से पैसा कमाना is important. बहुत कम लोग हैं जो मार्केट से पैसा कमाते हैं. मैंने कमाया था एक दिन के अंदर. ये स्टॉक ऊपर गया और मार्केट ने स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देते. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट विल आई टेक एन एंट्री अगेन ओवर हियर? द आंसर इज नो, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट. मेरा पोजीशन साइज मैं बड़ा नहीं रख पाऊंगा तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा. एंड मेरा रिस्क जो है वो बहुत बड़ा है. अगर स्टॉक यहीं पे टाइम स्पेंड करता रहा तो मुझे अपने पैसे को ब्लॉक नहीं रखना. मुझे ऐसी जगह पर एंट्री लेनी है जहां पे उसके जल्दी मूवमेंट देने के चांसेस ज्यादा हो. वो एक यही एरिया था. ठीक है. सो हमने बात की एस्ट्रल की. एक और देखेंगे हम, दो और देखेंगे. वन वॉज LTI Mindtree. You will see one common mindset in every stock which I trade. We'll see LTI Mindtree and see how I took an entry. I'll explain you the logics why I took an entry over here. You will see how I am able to manage my risk properly. You can see over here the stock was moving up. I would not have taken entry any over here because the stock has already given a move. And जब मुझे stop loss सही जगह लगाने का टाइम नहीं मिलता, जब मुझे stop loss लगाने की सही जगह नहीं मिलती, मैं एंट्री नहीं लेता. मेरा रिस्क अगर मैनेज नहीं है प्रॉपरली, मैं एंट्री नहीं लेता. So this was the place which I was watching this stock. Then the stock went down. It created a double bottom, tried to move up and followed after forming a gap. Now I saw 2-3 things over here. One was a demand zone which had a
big rise from here. Second, I saw a fall. Just in the Astral, we saw that there was a profit booking. I also had it in a mind that the people who would have taken an entry over here would have been looking to book profits over here because this is a strong support. So when the stock was falling, you can see over here 1, 2, 3, 4, 5 indecision candles, means the stock is not willing to go down. The selling pressure which we had over here has totally declined or depleted. I took an entry on this day. After the fall, it formed a doji, then it opened higher and closed higher. I took an entry over here. By the end of the day, around 3 o'clock, I took an entry. It tested my patience for twice, but was not able to hit my sniper stop loss. Why I say sniper? It was a very, you can say, precise stop loss, a very small stop loss of only 91 rupees. I took 6 stocks over here and the risk was again 500 rupees. It tested my patience for only 2 days and it blasted like anything. In 2 to 3 days, I was able to generate a risk to reward of 1:2. How it was possible? It was possible because I took an entry wherein the risk was minimum and I was able to keep a big position size. Now just assume if I would have taken an entry over here after seeing this big candle, then there was a risk of 200 rupees per trade and hardly would have been able to take only 2 to 3 stocks only. But just because of taking a sniper entry with a small stop loss, I was able to manage a bigger position size and quicker profits. Now let us move to the last trade which I want to explain you. Then I'll show you my current holdings, why I have taken those entries. One such stock which hit my stop loss was Tata Chemicals, and there were some mistakes which I did into that. I'll tell you what. I'll just remove all this for you so that we can discuss. ये सारा mess यहाँ से निकाल देते हैं. In Astral and LTI Mindtree, you must have noted one common concept: risk to reward. My risk to reward was totally managed in all those trades, but in this particular trade, my risk to reward was not managed. I saw that the stock over here is moving up, creating some bullish patterns, not able to break any of the lows. So this stock has momentum. But what mistake I did? I entered over here. In previous 2 cases, I entered near the base, but in this case, I entered slightly later. Just because of this fact that I entered later, my stop loss got big. And in order to achieve a good risk to reward ratio, that is 1:2, this was 1:2, I had an entry into the stock for a long time. And जब ये stock यहाँ पे आया तो I was discussing with my friend that should I exit or not. If I would have listened to my discipline, my strategy, I should have exited, but I didn't. Now same way as we discussed in Astral and LTI Mindtree, the stock has moved up in one direction. What about profit booking? This was point number 1 which was worrying me, that stock भाग चुका है already बहुत ज़्यादा. Second point which was disturbing me was a major resistance over here. So I was thinking that risk to reward has got bad over here. I did not expected this big fall in 2 days, but that's part of trading. Losses are part of trading. I had it in a mind that it might correct a bit and then move up, but it didn't happen. So the mistake I did, I took an entry late. Then I did not listen to my setup and I incurred a stop loss over here. Even after incurring a stop loss out of 10 trades in one trade, I am able to close 3.42% in profit. Now let us see my other trades which are running. You can see in these trades only 3 trades, only 3 ट्रेड मेरी ऐसी हैं जो लॉस में जा रही हैं, बाकी सब मेरी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं. एंड अगर मैं आपको इन ट्रेड्स को दिखाऊं तो हर एक ट्रेड के अंदर मैंने किसी भी ट्रेड के अंदर 500 से ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है. तो आप इजीली बता सकते हो कि मेरी कौन सी ट्रेड ऐसी हैं जो स्टॉप लॉस के पास जाने वाली है. ऐसी कोई भी ट्रेड नहीं है जो मेरी स्टॉप लॉस के पास जाने वाली है. आई एम कंफर्टेबली इन प्रॉफिट्स, राइट. सो दिस इज हाउ बीइंग और हैविंग अ स्मॉल कैपिटल आप भी अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो ग्रेजुअली एंड स्मॉलली. आई विल नॉट से कि आप एकदम से 5-6 लाख कमा लोगे साल के, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज आपका कैपिटल स्मॉल है. लेकिन अगर आप धीरे धीरे लगे रहोगे तो अगर आप 25 से 30% भी साल का कमा पाते हो, कुछ महीने बुरे जा सकते हैं, कुछ महीने अच्छे भी जाएंगे, ठीक है. अगर आप धीरे धीरे लगे रहते हो तो आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको
सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स को देख के एफएनओ भी करना है। एफएनओ मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझसे वो बहुत कुछ लेता है, मेरा टाइम लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मेरे पास नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के ना वेरी कंफर्टेबल। मैं एफएनओ तब करता हूँ जब मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है, कोई भी अच्छी एंट्री नहीं मिल रही है स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रही है और अगर आपको स्टॉक्स में एंट्री मिल रही है, देन बी विद अ सेफर एंट्री, जहां पे आपको पता है कि आप मैक्सिमम लॉस 500 रुपए का करोगे। एंड 500 रुपये तो हम एक बार पिज़्ज़ा खाने में भी लगाते हैं डोमिनोज के अंदर, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द मैथ्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी मैथमेटिक्स काम आती है, आपको याद रखनी है कि जब भी मैं रिस्क लूंगा, जब भी मैं लॉस करूंगा, 500 रुपये का करूंगा, लेकिन जब भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा मिनिमम 1:2 कमाऊंगा। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, मैं आपको अपनी ट्रेड बताता हूं। वो ट्रेड थी हमारी, you can see that was HPCL I suppose, wait a minute, हाँ भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम में नहीं, नॉट it's this is not updated right now, I think। if I see JK Tire, I'll show you my demat account only, that's not an issue। yeah, you can see in JK Tire I have 100 shares. At present I am holding only 11 holdings. That shows me 14 holding, but that's not correct. I'm holding only 100 holdings. Why I took JK Tire and how I averaged it? What I'm trying to say is कि आपको अपनी लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करना है, ठीक है। सो दिस वाज माय सेटअप ऑफ JK Tire। आई highlighted, I shared with all of you. The first entry which I took into JK Tire was in, I guess, this candle. I may be wrong. It was this candle. First entry which I took was over here. Why I took an entry over here? Because the stock showed some strength, then it was holding its highs, and then it gave me a very small stop loss. I took an entry, the stock moved up, did not reach to my stop loss. This is adjusted risk to reward ratio, the earlier was different. Then it again started showing some strength. Over here I again updated in the Telegram channel and I doubled my entry. Initially I took 50 stocks only with a risk of 10 rupees per stock, then I doubled it because I came to know that जो मैंने एंट्री ली है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। सो द पॉइंट इज कि अगर आपकी लॉस मेकिंग ट्रेड है उसको कभी भी एवरेज मत करो, एवरेज उसको करो जो आपको प्रॉफिट दे रही है। हो सकता है कि मैं स्टॉक को यहाँ तक ले जाऊँ एंड मैं इसको बीच बीच में एवरेज करते रहूँ, और हो सकता है मैं इसको कहीं पे बीच में भी एग्जिट कर दूँ। वो पॉसिबिलिटी तब डिसाइड होगी जब मुझे चार्ट एक इंडिकेशन देगा। अगर मुझे चार्ट इंडिकेशन देगा कि यहाँ से फॉल हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक लगातार ग्रीन कैंडल बनाता हुआ 3-4 ग्रीन कैंडल बनाता हुआ यहाँ पे पहुंच जाता है, तो मैं इसको एग्जिट मार दूंगा पूरे को, जस्ट बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगी। दूसरे सिनेरियो में अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो मैं इसको यहाँ तक भी ले जाऊंगा। एंड यू कैन इमेजिन विथ 500 रुपीज आई विल बी एबल टू जनरेट 4,000 to 5,000 rupees, and that is possible. If I can do it, you can also do it. Don't get attracted towards FNO and lose your money if you're not like able to trade properly. Just trade in cash stocks and try to limit your losses. If you're able to limit your losses, you will be able to maximize your profit. And I'm willing to also share my strategy with all of you provided I could get response for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है। मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, मैं कैसे बाय करता हूँ, कैसे एवरेज करता हूँ, कैसे स्टॉप लॉस सेट करता हूँ और कैसे मार्केट से पैसा कमा रहा हूँ, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा प्रोवाइडेड आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स। I'll see you guys in the next video. Till the time, take care. Bye bye.